Hello everyone, welcome to Sports Kabri. He reigns with me from Curious Harry, and we're here to discuss the India versus Kuwait game. It's all set up nicely for tomorrow's opening World Cup qualifier match for India. We're all excited. I know a lot of people are currently busy watching the India New Zealand semi final in the Cricket World Cup. But anyways, we have to discuss the football. We'll also discuss the cricket updates. Of course, we're sports fans and we're also constantly keeping tabs with what's happening in the Wankhede Stadium. Hiren, first of all, how are you doing? Excited for tomorrow's game, and are you excited about today's ongoing cricket match? आई थिंक इंडियन स्पोर्ट फैंस के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकते. आई थिंक आज सेमीफाइनल और कल इंडिया वर्सेस कुवैत इन फुटबॉल इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. सो there's going to be really exciting times and festival season भी है, तो definitely I am also excited, but let's hope so both the teams, Indian cricket team and Indian football team, win. Then I think और भी ज्यादा मजा आएगा. एक्साइटेड भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है. अगेंस्ट कुवैत अवे मैच, एवरीथिंग हैज बीन, मतलब आई थिंक देखते हुए थोड़ा सा वो भी है, लेकिन आई एम मोर एक्साइटेड. तो लेट्स सी हाउ इंडिया इज गोइंग टू परफॉर्म. Yeah, Souvik saying his focus is on the football. Uh, couldn't care less about the India New Zealand game. Fair enough. So we are talking about the football, of course. That's why we're here. And Hiren, let's first run through the squad that's come out, the final squad. I'll just list out everybody, and we can go department by department, and we can discuss each department. Um, so in the goalkeepers list, we've got Amrinder Singh, Gurpreet Singh Sandhu, Vishal Kit expected. Of course, he went in with three keepers. Those are the three keepers that have kept their place. Your thoughts on the keeping situation? आई थिंक परफेक्ट चॉइस. देयर इज अ, मतलब क्या बोलते कि ऐसा कुछ है नहीं कि आप बोल सकते हो. आई थिंक विशाल केत का फॉर्म हमने देखा है मोहन बगान के लिए, अच्छा करते आ रहे हैं. एंड अमरिंदर एंड गुरप्रीत सिंह संधू इज योर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर्स. तो आई थिंक वो तो मतलब ऑब्वियसली था ही कि भाई ये तीनों कीपर के साथ आप कंटिन्यू करेंगे. एंड एक चीज यहाँ पे नोटेबल ये है कि आपको सिर्फ इंडिया वर्सेस कुवैत गेम ही नहीं देखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कतार वाला मैच भी है, ये जो स्कोर अनाउंसमेंट हुआ. तो कीपर में आई हैव नो एनी, क्या बोलते कि एनी कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज गुरप्रीत सिंह संधू ने भी जिस तरह से इस सीजन बेंगलुरु एफसी ने नो डाउट अच्छा नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप गुरप्रीत सिंह संधू का परफॉर्मेंस देखेंगे देन ही हैज बीन रियली गुड. और अमरिंदर ने भी अगर आप देखें तो ओडिशा एफसी के लिए इस सीजन अच्छा किया है अभी तक. सो आई थिंक कीपर डिपार्टमेंट इज सॉर्टेड आउट. आई थिंक वहाँ पे ज्यादा कंसर्निंग चीजें है नहीं. आई थिंक नो डाउट दे नीड टू बी टॉप ऑफ देयर गेम अगर कुवैत के सामने और कतार के सामने आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो. बट आई थिंक इट्स अ सॉर्ट आउट डिपार्टमेंट फॉर इंडियन टीम. Fair enough, Hiren. Fair enough. It looks like the keeping situation is sorted out. Lord Becky has pointed out the players who've been dropped: Glenn Martins, Vikram, and Nanda. We'll get to that part. Apuya is finally back. Again, that's an important thing that we're going to talk about. So moving on to the defenders: Akash Mishra, Lanchalunga, Mehtab Singh, Nikhil Pujari, Rahul Beke, Roshan Singh, Sandesh Jingan, and Subhashish Bose. Nobody dropped here, Hiren. What do इज you make of एक्सपेक्टेड बिकॉज the expected? आप किसी को भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने 4 सेंटर बैक के साथ तो जाना ही पड़ेगा. यू कांट गो विथ 3 सेंटर बैक, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग 11 ही खिलानी है, यू नीड अ बैकअप ऑल्सो. तो कहीं कोई प्लेयर को थोड़ा सा अगर इंजर हो गया तो यू नीड ए दैट बैकअप. तो आई थिंक राहुल बैक एज अ फोर्थ सेंटर बैक वहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं. एंड दोनों फुल बैक्स पे आपने एक एक ऑप्शन रखा है, सो दैट्स ऑल्सो परफेक्ट. तो आई थिंक जैसे हमने पहले भी बताया था कि बैकलाइन से मोस्ट प्रोबेबली कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक आप जितने प्लेयर आपको रिक्वायर्ड है उतने प्लेयर आप लेके जा रहे हो. सो वहां से कोई सेंस ही नहीं बनता था कि आप प्लेयरों को ड्रॉप करें. लेफ्ट साइड पे आकाश मिश्र बोस, राइट साइड पे रोशन सिंह एंड आपका निखिल पुजारी. सो मतलब आपके पास रूम ही नहीं है कि आप किसी को ड्रॉप करो और रिस्क लो वो, क्योंकि सो आई थिंक डेफिनेटली डिफेंस लाइन इज द बिगेस्ट कंसर्न आउट ऑफ द 4 अगर डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो. लेकिन आपके आपने जो चूज किए हैं, you have to go with them, simple as that. Yeah, yeah. In terms of squad selection, I don't think he could have done anything else. He had to go with this, and he's gone with it. It's fair enough. एक दो प्लेयर के साथ आप मतलब आप कर सकते हो डिबेट कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, बट आई थिंक कोच हैज टेकन द डिसीजन एंड लेट्स वेट कि भाई क्या उन्होंने जो डिसीजन बनाया वो यहाँ पे सक्सेसफुली
हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं कि उनको पे ऑफ करता है कि नहीं करता है, या फिर देखना वो इंटरेस्टिंग सा रहेगा। A couple of people pointing out Rohit's inclusion. We'll obviously talk about this. Now we're moving on to the midfielders sort of segment, and yeah, so these are the midfielders that have been picked: Anirudh Thapa, Brandon Fernandez, Apuya, Liston Colasso, Sahal Abdul Samad, Suresh Singh Wangja, Mahesh Singh Naura, Rohit Kumar, and Udanta. So of course, two of the players here, you call them wide players. You remove Mahesh and Udanta. The rest are pure midfielders. Happy with this midfield because Hiren, a lot of people are pointing out that they aren't quite happy with Rohit's inclusion. आई थिंक दो प्लेयर रोहित कुमार एंड ग्लैन मार्टिन से भी लोग काफी ज्यादा खुश नहीं थे, एंड ग्लैन मार्टिन को ड्रॉप भी कर दिया गया है स्कोर से, जो फाइनल स्कोर है उसमें से। एंड रोहित कुमार का कंसर्न है, देखिए जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि उसका जिस तरह से बेंगलुरु एफसी के लिए भी फॉर्म रहा है, उतना ज्यादा कुछ खास वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड रिदम में भी नहीं दिख रहे हैं, तो दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। बट रोहित कुमार का जो सिलेक्शन है वो उनके करंट फॉर्म के बेसिस पे नहीं हुआ, वो पिछले 5 6 7 8 महीने से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, फ्रॉम दी आई वुड से कि हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई गोस्टमी गोन विथ रोहित कुमार रादर देन ट्राइंग एनी न्यू प्लेयर और एनी previous experienced player, so that's why he has been selected। एंड कंसर्न डेफिनेटली है रोहित कुमार का फॉर्म को लेके, क्योंकि आई थिंक वो उनको भी गेम टाइम तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला, क्योंकि आप देखिए अपुया, थापा या सहल या फिर उसके साथ जाओगे तो यू कांट प्ले ऑल ऑफ देम 90 मिनट, सिंपल एज दैट। तो आपको ब्रेंडन ब्रेंडन का फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे कि ब्रेंडन का फॉर्म कैसा है। ब्रेंडन हैज डन गुड विद एफसी गोवा टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक उसको लेफ्ट विंग पे भी ट्राई किया गया है, उसको अटैकिंग मिडफील्डर पे भी ट्राई किया गया, एज अ रिस्पांसिबिलिटी भी उनको एज अ कैप्टन है। सो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अभी तक एफसी गोवा के लिए, अगर आप देखें तो। सो लेट होप सो इंडियन टीम के लिए भी सेम परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाए। सो अटैकिंग मिडफील्डर में सहल एंड ब्रेंडन आई थिंक परफेक्ट चॉइस। सहल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो 70-80 मिनट में, बाद आप ब्रेंडन को ला सकते हो वहाँ पे। एंड डिफेंसिव मिडफील्डर में आपके पास सुरेश वांगजा, मोपुया, आई थिंक दोस टू आर गुड ऑप्शन। थापा भी आपके रेगुलर स्टार्टर प्लेयर है, सो ही आल्सो कम्स इनटू द मिक्स। एंड देन रोहित कुमार आई थिंक विल बी द फोर्थ, आई वुड से कि सेंट्रल मिडफील्डर जो आपका होल्डिंग मिडफील्डर का रोल प्ले करेंगे। सो मिडफील्डर में भी आई वुड नॉट से कि भाई इतना ज्यादा कंसर्निंग चीज है, नो डाउट प्लेयर का फॉर्म का कंसर्न जरूर है रिगार्डिंग रोहित कुमार। अदर प्लेयर्स आर इन गुड टच। सुरेश वांगजाम भी अच्छी रिकवरी कर लिया है, आई थिंक धीरे धीरे वो भी रिदम में दिख रहे थे। थापा हैज बीन कुछ मैचेस अच्छे खेला है, कुछ मैचेस काफी पोर रहा है। सहल अब्दुल समद हम सबको तो टॉप नॉच। सो मिडफील्ड में आई थिंक गुड इनफ मिडफील्ड है। Yeah. He didn't. Lord BK saying the Indian team didn't train today because of the wet pitch. And a couple of people are asking about telecast as well. Not confirmed is what we know, right? डेफिनेटली आईएसएल की जो वेबसाइट है वहां पे ये दिखा रहा है कि स्पोर्ट 18 एंड फैन कोड, बट एएफएफ की ओर से कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल हमें ये देखने को मिल सकता है। बाकी अरेबियन कंट्री में तो, अरब कंट्रीज में तो हो चुका है अनाउंसमेंट कि कहाँ पे टेलीकास्ट होने वाला है, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं हो रहा है इतना बिग। आई थिंक इस सीजन का सबसे बड़ा मैच है हमारे लिए अभी तक का, जितना भी इंडियन टीम खेली है। अगर आप मार्च से शुरुआत करेंगे इस साल का, हीरो ट्राई नेशन से लेके अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, और उसका टेलीकास्ट का या फिर उसका कोई मार्केटिंग नहीं किया, फिर भी आप देखिए लोग क्या बोलते हैं एक्साइटेड इस मैच को लेके। सो आई थिंक रियली रियली पुअर फ्रॉम एएफएफ। थोड़ा सा मेरे बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब कल तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, अनाउंसमेंट होना ही भी चाहिए। अगर नहीं होता है देन दैट्स दी, मतलब क्या ही बोले फिर तो। बट आईएसएल की वेबसाइट में दिखा रहा है स्पोर्ट 18 एंड फैन, सो लेट्स सी। Yeah, a couple of interesting now that we've run through almost everything. We just have the forwards left. Lanzuara Changte, Manveer Singh, KP Rahul, we've got Sunil Chetri and Ishan Pandita. Surprising to see Ishan making the final squad here. नहीं सब आई थिंक इट्स राइट डिसीजन कि उसको यहाँ पे रखा गया है। नो डाउट आप बोल सकते हैं कि उन्होंने इतना मैच टाइम नहीं मिला, गेम टाइम नहीं मिला उसको, 2-3 बार एज ए सब्स्टिट्यूट आके ही खेले 15-20 मिनट और उतना इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए। लेकिन वो जरूरी है ईशान पंडिता के लिए, क्योंकि अभी आप हमने देखा है कि वो इंजरी के साथ काफी ज्यादा मतलब उन्होंने मैचेस नेशनल टीम के लिए भी एंड केरला ब्लास्टर के लिए भी लॉस किए। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट चॉइस। आई थिंक ही विल बी द थर्ड चॉइस सेंटर क्या बोलते हैं स्ट्राइकर, एंड आई थिंक टीम के साथ रखना डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा,
एंड कुछ 10-15 मिनट अगर खेल भी लेगा तो आई थिंक वो उनको आपको क्या बोलते हैं कि एक जज भी आप भी कर पाओगे और उसको भी फील आ जाएगा अबाउट द इंटरनेशनल फुटबॉल. सो आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन, नो डाउट. आप उसके फॉर्म के ऊपर या फिर जो मैंने जैसे बोला कि उसको गेम टाइम नहीं मिला है उसको क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आई थिंक टीम में मिक्स करने के लिए आई थिंक वो डिसीजन लिया गया. और हम हर वक्त बोलते रहे कि भाई छतरी के बाद कौन कौन, तो ऐसे ही आपको मौके देने पड़ेंगे. यू हैव टू टेक द रिस्क एंड कुछ बार आप फेल होंगे, कुछ बार आप मिस करेंगे, बट this is the risk you have to take. So I'm happy with the Isan Pandita's inclusion in the final score. Fair enough, fair enough. Hi, Anava. Anava's here. Anava's joined us. Guys, everybody who's watching the India-New Zealand game, just a quick update. New Zealand need 132 in 60 balls, last 10 overs of the game. Just wanted to get a quick update on that. Anava, the final squad's out. We're almost there. It's just a day away now. Your thoughts on the final squad? 3 players dropped. Glenn Martins, Vikram Pratap, and Nanda. Any surprises there? I know you're on mute. Good evening, everyone. I thought all three were surprises to me in the end. I think all three could have made the squad if you're taking them into your 26 squad. And we've spoken at length at Vikram Pratap being a potential substitute. Glenn was a potential substitute as a 6. Yeah, as always, Igos Timuch is good for a surprise. And therefore, let's see who he then picks in the starting 11 tomorrow, right? So difficult one on one side. How are you guys feeling today? Does it feel like there's a World Cup qualifier sort of around the corner? I feel yes. I was speaking a little earlier with a friend of mine in Mumbai who is totally sort of immersed in this whole cricket World Cup semi-final thingy, and he's was talking, oh, David Beckham is here and this and that and everything, and I was like, yeah, nice. Not bothered. I mean, a big story in India was, for example, this whole Thomas Müller getting an Indian cricket jersey, which is a brilliant PR story from Adidas. That's a story in India. I mean, Thomas Müller posted it on his socials, but I don't think in Germany anybody bothered about it. So you realize that things. But I'm more concerned about tomorrow and about how we play against Kuwait. No, rather not. I'm not concerned about how we play against Kuwait. I'm rather concerned about the end result. I think we've played a lot of matches since last year's June, since we qualified for the Asian Cup. This is the biggest match since last June. And Kuwait is going to be a tough opponent at home. They have some scores to settle after that SAF Cup final loss. And I'm saying this sportingly, nothing else. And of course, we've discussed it a number of times in the last 2 days. We did it as well, Rahul, when we did our little interview yesterday, that we are missing very, very key players. But I'm happy. Apuya is back in the squad. I think there's certain people who had even written in our chat room that Apuya would not be part of the final squad. And so in that way, that's a positive sign that he's in there. So therefore, I'm hoping for a good result. But on the other side, I'm quite worried about what I've seen against Malaysia in the last game. Let's hope our boys can pull it off. Yeah, the constant updates in the chat, Siraj leaking runs. But anyways, away from the cricket, heavy rain expected tomorrow, says Lord Becky. What sort of effect will this have on the game? डेफिनेटली पिच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. अगर आप पासिंग गेम खेलना चाहोगे तो देन डेफिनेटली दैट विल बी हार्ड टू एग्जीक्यूट इफ रेन इज यू कैन से लिटिल बिट हेवियर. बट आई थिंक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें स्टीमेक ने बोला है कि पिच से मतलब थोड़ा सा रेन हुआ है तो थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा वो हो गया है. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो आई डोंट थिंक सो. वो तो पिच वैसे भी भाई दोनों टीम के लिए सेम ही होगी, तो उतना वो उसमें कोई वो वाली चीज़ नहीं है. रेन हो या ना हो, आई थिंक उससे ज़्यादा मतलब गेम प्ले में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बट उतना ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ. सो लेट्स सी. Yeah. Guys, I know we've done this a couple of times before.
But actually, before we move on, I saw something interesting in the chats. Somebody pointed out Rahul KP's inclusion over Vikram. Do you guys agree with that selection? Would you have gone for Vikram over Rahul KP? Arunava? Similar Doesn't standard. matter. Yeah, I mean, at that level, we have a lot of players in these attacking positions who are potentially of a similar quality. I like in Rahul KP mentality, but that's the same thing I like in Vikram as well. Those two boys are sort of those characters who can give you that edge. Where I would say that I would the fighter spirit is a little stronger in Vikram, while I would say the quality is a little better in Rahul. If I would have to compare those two, and therefore again, um, there are other players who where I'm surprised that they still made the cut. If I'm bringing Glenn Martins into my 26, I thought Glenn would have most probably been in there, and then most probably Rohit Kumar would have been the one out. Would have been my logic. I didn't see any training, so therefore always, I always said it. The coaching staff watches training, interacts with the players. Might be other reasons. Nanda Kumar seemed to be a given 23 player for the Indian team. So therefore, again, we've got a lot of these players where we would say if we had a squad of 35, 40 players, who gets into the final 23, it's going to be 2, 3 here and there always. Yeah, fair enough. Fair enough. John, Hiren's already confirmed this. We do not know as of yet. AIFF hasn't confirmed anything. But Hiren, you said that it's been listed as Sports 18 and fan code, but there's no confirmation as such from the IFF. Guys, like I was getting to it, we were going to discuss our lineups. We've already done it. Just want to know, I'm going to quickly run through sort of the standard lineup that I've sort of come across from everybody. And you guys can let me know if you want to chop and change anything. Keeping department, Gurpreet keeps his place for an important international game. Uh, both of you in consensus with this. And guys, please do let us know your opinions if you think Gurpreet should start tomorrow. Um, Hiren, Gurpreet? Definitely, I think Gurpreet would be the my first choice also, because आपको वो शॉट स्टॉपर भी चाहिए. I think rather than away match में I would say कि बॉल प्लेइंग गोलकीपर से I would go for the short stopper, because अवे में हमने देखा है कि इंडिया जब I think गोल कंसीड करती है, तो चाहे वो मलेशिया हो चाहे बड़ी टीम हो, they gone for the क्या बोलते 2-3 goals. So I think गुरप्रीत सिंह संधू, आई थिंक मैंने जैसे बोला कि संधू का आप परफॉर्मेंस देखे बेंगलुरु के लिए, तो वो अच्छा रहा है, ऐसा भी नहीं रहा. आई थिंक सेकंड मोस्ट सेव से अभी तक. आई थिंक पहले पे आई थिंक टीपी रहने से दूसरे पे गुरप्रीत सिंह संधू है. तो दैट शोज कि भाई उनकी जो क्या बोलते हैं पर्सनल फॉर्म है, वो टीम के ऊपर टीम से कंपैरेटिवली बेटर है. सो आई वुड गो विथ गुरप्रीत सिंह संधू. Enough. So I can say Arnav also sort of nodding his head, agreeing. And I'm going to use this as a template, Arnav. Lord Beke's 11. Nikhil Mehtab, Jinkan Mishra, your back four. What do you think about that? Normally, yes. But again, Igor is always there for a surprise one or two there, here or there. I don't know. I don't know why I have this feeling. Again, some people might think I'm crazy. I have this, depending on what has been happening in training, that maybe Rahul Beke might play as a centre back tomorrow. This would be in place of Mehtab. Yeah. Yeah. Because Mehtab has had his problems in recent weeks. Let's be honest about it. He's shown, again, we saw that against Mitrovic, a little bit of lack of sort of international maturity as well. Of course, Mitrovic is a different level than what he'll face against Kuwait. And Lalchon Lunga, I think, is not rated by the coach to be a starting player. So therefore, that might be something, again, it's not how I would play, but that's my interpretation of how I potentially see the coach deciding and picking his team. Yeah, okay. Hiren, any changes for you in the back four? Arnav was saying he would probably, he has a gut feeling that probably Rahul Beke could stand place of Mehtab. Any changes for you from this back four that has been put out by Lord Beke?
राहुल बेके अगर सेंटर बैक स्टार्ट करते हैं दैट वुड बी द बिग डिसीजन आई थिंक. अगर वो पे ऑफ कर गया देन आई थिंक तारीफ होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बैकफायर किया देन आई थिंक ईगो स्टेमिक का भी क्रिटिसिज्म मतलब आई थिंक चलने के लिए रेडी होना पड़ेगा. क्योंकि आप हमको सबको पता है कि राहुल बेके इज नॉट अ प्रॉपर सेंटर बैक, बट अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन या फिर सिचुएशन आप उसको अगर बिफोर दी मेहताब एंड चुंगनोना स्टार्ट कर रहे हो देन दैट वुड बी बिग डिसीजन. सो बैक लाइन मैंने जैसे बोला आई थिंक सेंटर बैक इज बिग कंसर्न फॉर इंडिया, बिकॉज अनवर अली जो क्वालिटी ब्रिंग करता है जो भी वो करता है आपके पास सिंपल एज फैक्ट कि आपके पास उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं. आई वुड से उसका 80% भी नहीं है. तो दैट्स द बिग कंसर्न. अगर आपके पास उसका 80% भी अगर आप ऐसा क्वालिटी का प्लेयर होता तो आप बोल सकते थे कि हाँ भाई ये प्लेयर के साथ आप मतलब कुछ होप रख सकते थे. हेलो अनुराग कौशिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. तो आई थिंक दैट इज द कॉल जो आई थिंक कि संदेश जिंगान के साथ कौन सेंटर बैक पेयर में स्टार्ट करेगा. आई थिंक दैट वुड बी बिग डिसीजन फॉर इगो स्टीमिंग इन टुमारोज लाइनअप. आई थिंक एक या दो डिसीजन ही ऐसे है स्टार्टिंग 11 में जो कि आई थिंक बड़े होने वाले हैं. दूसरा आई वुड से कि सेंट्रल मिडफील्डर में अपुया के साथ किसको स्टार्ट कराते हैं, सुरेश या थापा. आई थिंक दिस टू डिसीजन, एक सेंटर बैक का और एक आपका मिडफील्ड का, आई थिंक विल डिसाइड इंडियाज गेम प्ले और वी कैन से कि कौन सी स्ट्रेटजी के साथ वो कुवैत के सामने खेलने जा रहे हैं. Yeah, so now coming to that sort of central midfield area, which is so important, this template that I've seen again across a lot of people who've given their opinion is Apuya, Suresh, and Sahal. Arnava, would you go with the same three, or is there a good shout for Thapa? I think you need a sort of a destructive element in that midfield. And we were talking the other day where I thought maybe Glenn Martins might have been that option, but Glenn Martins is not there. Rohit Kumar to me is not in form. Thapa and Brandon are two more attacking minded players. So I would think that Suresh and Apuya would be the choice. But it'll be interesting to see if he really starts with Apuya or not. If Apuya doesn't start, then Anirudh Thapa gets it. Very interesting. That's I mean that's a conversation I think we should have, because we're sort of assuming that Apuya is going to start because he is, in our eyes, the best quality midfielder India has. But is he in the eyes of the coach? Hiren, do you think Apuya is a sure shot starter for tomorrow? आई थिंक ही शुड बी विथआउट अ डाउट, बिकॉज अगर जिक्सन नहीं है देन आपको उसके साथ स्टार्ट करना ही चाहिए मेरे हिसाब से. आई थिंक उसका और सुरेश का जो पेयर है वो काफी बेटर रहेगा. सो फॉर मी आई थिंक अपुया शुड बी स्टार्टर, बट लेट्स सी गोस्टेमिक साहब क्या वो करते हैं या फिर थापा एंड सुरेश मांगजाम की मिडफील्ड के साथ जाते हैं. दैट वुड बी आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी. सो आई मैंने जैसे बोला कि मिडफील्ड एंड आपका जो सेंटर बैक है उसका डिसीजन ही की डिसीजन है जो आई थिंक गोस्टेमिक को लेना है. और वहीं पे क्या बोलते हैं कि आपको अपने गट्स या फिर आपने जो ट्रेनिंग सेशन में देखा है कि कौन सा प्लेयर काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है वो आई थिंक आपके उनके साथ जाना चाहिए. बाकी सारे पोजीशन तो आई थिंक ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट ही है कि जहाँ पे आपको फर्स्ट चॉइस प्लेयर पता ही है कि ये मेरे फर्स्ट चॉइस प्लेयर है. Yeah, fair enough. Guys, of course, the front line does this has to pick itself, right? Changte, Chetri, and Mahesh. Listen, Colasso probably has given something for the coach to think about. Arnava? No, I don't think that Liston at the moment is a starter for me. I think Mahesh and Changte showed also against Malaysia the potential and the quality that they have. Mahesh more in the first half, Changte more in the second half. Therefore, in combination with Sahal and with Sunil, I think that's, we've been talking about it quite a bit in the last few weeks. I think that four-man attacking unit is something we should not play around or tinker with. I think that's the quality that we have, and we need to allow these guys to really showcase their talent. And that's what I would wish. Absolutely, absolutely, Arnav. I think I agree as well. Hiren, Arnav and I have spoken about this. Wanted to get your take again. I think we've also spoken about this, but the importance of tomorrow's game sort of, is so high that if we lose tomorrow, that mentality sort of shifts, and we could be, a little behind the eight ball when we take on Qatar at home, and suddenly you are seeing two losses in two games. And
it can go really bad from there. So do you think tomorrow is our most important game of the qualifiers? आई वुड से क्या बोलते हैं कि शुरुआत तो हर कोई चाहता है कि अच्छी हो, एंड आपने जो पॉइंट बोला कि मेंटालिटी वाइज एंड सारी चीज़ें के हिसाब से कि अगर आप देखें तो इट्स इज मोस्ट क्रूशियल गेम फॉर इंडिया एंड कुवैत और इंडिया ही, मतलब अगर आप वैसे भी देखें तो कतार क्लियर फेवरेट्स माना जा रहा है कि गोज इनटू द नेक्स्ट राउंड, तो कुवैत एंड इंडिया के बीच में वो टक्कर है, एंड आई थिंक जो 1 वर्सेस 1 मैच है, आई थिंक दैट विल बी रियली रियली क्रूशियल फैक्टर. So in that sense also it's a very very crucial game for India to start well. And I think जिस तरह का mindset सुनील छेत्री एंड कोच का मैंने अभी रिसेंटली जो 2-3 इंटरव्यू दोनों ने दिए है, आई थिंक वो दिखा है रादर देन कि भाई इंजरीज का, दोनों ने आई थिंक जो बोला है वो मेरे को काफी सही लगा कि सुनील छेत्री ने भी बोला कि बेरिंग 1-2 इंजरी वी आर प्रिपेयर्ड. आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ईगो स्टेमिक ने भी सेम चीज बोली कि इंजरीज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एंड वो तो कुवैत के प्लेयरों, कुछ प्लेयरों को भी हुई है, एंड हर मंथ टीम चेंज होती है, जो कि हमको पता है फुटबॉल में यू कांट गोज विद द, यू कैन से कि आइडियल 11, आपका कोई ना कोई प्लेयर तो इंजर्ड होता ही रहेगा, नो डाउट. इंडिया के लिए ड्यू टू दी बैकअप, जो जैसे हमने बोला कि एनओ का आपके पास बैकअप नहीं है, इसलिए ज्यादा इफेक्ट करता है. अदरवाइज अगर आपके पास कोई बैकअप होता तो उतना ज्यादा हम क्या बोलते कि वो नहीं होता. So that's one of the factor, but I would not say कि भाई अगर हम हार जाते हैं then that's only the factor, I would say. So in there I think we need a solid start of this World Cup qualifiers for the conference also, and recent जो पिछले 2 महीनों में जो परफॉर्मेंस हमारी आई है, एंड पर्टिकुलरली अवे में, मतलब जो एक हमारा रहा है पिछले 2-3 सालों से, आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दिस streak, I would say. So Yeah, yeah, I think we must need a result against Kuwait. yeah. I'm just going to By slip the that. way, New Zealand's fifth wicket has been Yeah, fallen. 295 for 5. Glenn Phillips gone. Bumrah's picked him up. So just some news on that as well. 103 from 43, the equation right now. And we will continue with the football. Okay, so Vinny is quite confident that we're going to smash Kuwait tomorrow. There's a tactical question, guys. Will Kuwait press high tomorrow? They're playing at home. They're certainly, like Arnav, you said, they have a point to prove. They have something, sort of. It's sort of like a revenge game, kind of. Do you expect them to press high? The question to me is not, are they going to press high? I think they'll try and play their football, which they also showed in Bangalore. I think that is what they will try and play. They'll try and combine. They're trying to get the ball wide, get the ball into the middle, try and score, or try and play direct. That's what I saw of Kuwait in the final, and they can allow the ball to freely to flow. I think they will have learned a few lessons of how Malaysia broke the Indian defense. Sometimes very direct football, sometimes playing more via the wings. So therefore, that's going to be the interesting part of how stable is India's defensive unit. That's for us. That's the question. I think that we can score 1 or 2 goals up front. I think that's a given with that attacking unit. Can we avoid conceding 3-4? That's those are the 2 questions to me. I think we will score. Having seen what we've done in the recent past, I think we will score. Defense, start to finish, it's a question of our defense. It's a very interesting point. If the Kuwaitis have sort of observed India's last game against Malaysia, they would have realized that it was Jingan and Mehtab in the central defense, and that they can be got at. Hiren, so do you expect them to come out? आई थिंक हाई प्रेस और या फिर उससे भी ज्यादा आई थिंक जो हमने साफ में भी देखा था कि दे गो मोर फिजिकल विथ इंडियन टीम्स. दे नोज, हमने जिस तरह से उन्होंने आई थिंक जो ग्रुप स्टेज का मैच था साफ में, जिस तरह से हमको प्रोवोक किया था, एंड हमारे कुछ प्लेयरों ने वहाँ पे कार्ड्स भी किए थे, ईगो स्टेमिक ने भी खाया था कार्ड. सो आई थिंक वो आई थिंक इंडिया को काफी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा. आई थिंक प्रेसिंग और उन सबको तो आप क्या बोलते हैं कि टेक्निकली आप बीट कर सकते हो, लेकिन टू कंट्रोल इमोशन like in this crucial match will be very very important. साफ में तो चलो जो भी हो गया सो हो गया, मतलब आपके फेवर में आप फाइनल से आप जीत गए, हार भी गए होते तो उतना ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता. बट यहाँ पे अगर आप 9-10 मैन डाउन हो, दिस विल अफेक्ट वेरी वेरी बैडली.
एंड पर्टिकुलरली विद द, जैसे सर ने बोला कि आपका डिफेंस सबसे बड़ा कंसर्निंग पार्ट है, उसके साथ फिर 10 मैन के साथ डिफेंस करना, इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट. सो मैं ज्यादा कंसर्न उस चीज के लिए हूँ, आई थिंक, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली दे विल ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा फिजिकल होंगे, कुछ ऐसे टैकल्स होंगे कि जहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि इंडियन प्लेयरों को उकसाने की या फिर प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर उसमें कहीं कार्ड खा लिया हमारे सेंटर बैक या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर ने, then it will be very very difficult for India to defend against Kuwaiti side. So that's my concern. And Yeah, another problem, I feel we've given away a lot of penalties in the recent past. Exactly. That's we've been late in situations, misjudgments. So yeah, yeah, that's a concern, I would say. yeah. One Discipline. more thing, discipline, and one more thing I want to add is regarding the क्या बोलते हैं कि जो हमने मलेशिया के सामने गलती की थी कि पिच थोड़ी सी खराब थी और हमने जोन 14 या फिर बॉक्स के राउंड भी हमने पासिंग खेलने की कोशिश की थी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ईगो स्टीमिंग ने भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि आपको आई थिंक क्लियरेंस वहां पे करना पड़ेगा. यू डोंट नीड टू डू दैट दैट काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे हमारे प्लेयरों ने 2-3 प्लेयरों ने मिस्टेक किए थे और 1-2 गोल हमने उसके चलते कंसीड भी किए थे, 1-2 खाने से बच भी गए थे. सो मैं वो नहीं चाहता हूँ. आई वुड वांट कि आराम बॉल खेले. आई मतलब आई डोंट केयर अबाउट द गेम प्ले, टू बी ऑनेस्ट. आई जस्ट वांट 3 पॉइंट्स, सिंपल एज दैट. कल कैसे, क्योंकि ये मैंने काफी बार बोला है कि एशियन गेम्स, एशियन कप एंड वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो भी आप गिन लीजिए, ये दोनों ऐसे टूर्नामेंट की जहाँ पे रिजल्ट मैटर करेगा. वहां पे कैसा गेम प्ले खेला है वो कोई भी लोग बोलेगा नहीं कि आपने ऐसा गेम प्ले करके जीता है. वहां पे मैटर करेगा कि आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया कि नहीं किया. सिंपल सी बात है. कैसा गेम प्ले किया वो कोई बात नहीं करेगा. सो वो सारी चीजें आपके साफ इंटरकॉन्टिनेंटल और ये मेरदे का उस सब में करने की चीजें हैं, कि जहाँ पे आपको गेम प्ले और उन सबको डेवलप करना है. यहाँ पे तो आपको चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी ओपोनेंट, आपको गेम प्लान लेके आना है, एंड वहां पे किस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो उसको, एंड किस टेक्टिक के साथ आप उनको भी प्रेशर में डाल सकते हो. क्योंकि अगर सर ने जैसे बोला कि हम 2-3 गोल करेंगे और उसमें अगर इंडिया ने मान लीजिए कि पहला गोल अगर क्या बोलते कि कर दिया, देन आई थिंक प्रेशर कुवैत के ऊपर भी आएगा. हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया के प्रेशर के ऊपर, तो क्योंकि वो होम पे खेल रहे हैं 1-0 डाउन होने से, आई थिंक वो भी ज्यादा क्या बोलते कि अगर उन्होंने भी कोशिश की तो हमें चांसेस भी काफी मिलेंगे, एंड वहां पे हमारी फ्रंट लाइन का रोल काफी क्रूशियल हो जाएगा. जी सर बोलिए. हाँ, Hiren, very good point. But you also saw in the recent matches, we very often take a 1-0 lead, but we cannot defend that 1-0 lead. So therefore, there are, the things that if we had this conversation in July, we would have had a totally different discussion. We are now in November, 16th of November. In my opinion, the most important day in regard to the men's national team, most important match. And this will define where our journey will go. So Yeah, that's the question. That's the question. Can we get that result? We have it in us. Does the coach make the right decisions? And then let's see. Play your best. Again, I think we will talk post-match tomorrow. If we've played well, nice. But Hiren said a very important thing. Nobody cares about results, right? Does anybody, again, it will be part of history, but does anybody care that the Saudis beat the Argentinians in the first match in the World Cup? The last match counted, right? Argentina won the World Cup. These are realities. So therefore, we need to be very, very clear that बेस्ट, सॉरी सर टू इंटरप्ट, बेस्ट एग्जांपल आज का ही, अगर मान लीजिए कि आज इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई तो आपने 9 मैच जो खेले जीते, उसका कोई मतलब ही नहीं है. चाहे आप कैसे भी वन साइड डोमिनेट करके भी आपने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया, सारी चीजें की, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. एक साल बाद जब हम बात करेंगे तो वही बात करेंगे कि इंडिया लूज इन दी सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड. हम वो बात नहीं करेंगे कि हमने 9 मैच लगातार तरीके से जीते थे और भले ही चाहे कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीती हो, लेकिन डोमिनेंस हमारा रहा था. बात वही होगी कि आपने सेमीफाइनल फाइनल में किया क्या. सो वर्ल्ड कप क्वालिफायर इज द टूर्नामेंट लाइक दैट, कि जहां पे आपको रिजल्ट मैटर करेगा, चाहे 1-0 से जीतो, कैसे भी करके जीतो, कैसे भी फुटबॉल खेल के, लॉन्ग बॉल करके, जैसे भी करके जीतो. You need that win. Simple as that. And that's the point also when we come to speak, let's say, about the Champions League, right? The big teams,
often walk through the group stage. Some struggle, but some of them who they do then struggle, they are then there when it's needed, when the results are needed in the knockout stages of the competition. And that's the quality. If whatever we've done over the last 15 months, 16 months, it doesn't matter. If we lose tomorrow, all of that doesn't matter. All this, we need to get into pot two, this is our ranking. All of that doesn't matter. Tomorrow, the result comes. Absolutely. That's the thing. Yeah, I completely agree with you guys. These sort of tournaments, when it's you really have to just deliver. You just want the result on your side, even if it's a scrappy goal that we score and we defend our way to 1-0. It's fine. The win is what matters. Like, I completely agree with you guys. And somebody again asking where the match is going to be shown tomorrow, guys. Again, no confirmation from the AIFF yet, but Sports 18 fan code are your likely destinations. Okay, guys, time for some predictions. Hiren, first coming to you. What do you think is going to happen tomorrow? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी जैसे बोला कि एक्साइटमेंट भी है इस मैच का, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि भाई कल क्या होगा, क्योंकि आई थिंक रिसेंट पास में इतना इंपॉर्टेंट मैच हमने खेला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट गेम, विदाउट ए डाउट। आई एम कंसिडरिंग दिस 2 मैचेस मोर इंपॉर्टेंट देन एशियन कप, जो अपकमिंग टूर्नामेंट आने वाला है। सो रियली रियली मतलब क्या बोलते कि वो स्टमक में जो बटरफ्लाई होते हैं ना, उस तरह का मोमेंट है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक but I am optimistic about this match, and I think it will be close fight. India winning by, I would say, 3-2. I think this will be a close fight with the defense जो हमारा है। I think concede तो हम करेंगे, बट 3-2 स्कोर लाइन होगी। अनुराग भाई ने कहा क्या बोलते कि प्रेडिक्शन है 1-0। आई थिंक एक पेनल्टी से गोल आएगा हमारा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। Very interesting, guys. Whoever is dropping 2-1 scorelines, can you just let us know who the match is going to go in favor of? Vinith says 2-0 India. A lot of people optimistic, Arnava. Are you going with your heart or your head? I was talking earlier today with a certain gentleman called Shayan, and I said I don't have a good feeling actually. And if you would ask me, and I have to be honest, I want to be optimistic, and I want India to win, but somehow the other I feel, it's going to be a Kuwait win. I feel. Okay, so we've got Hiren going for an India win, Arnava going for a Kuwait win. Sort of nicely sets it up, and we can have some fun after the game tomorrow, and we can discuss these predictions, guys. We know this is an important game, and we're really looking forward to it, and all of that. But is India? Do you think India are prepared and they've done all that they could have done before going into this fixture? Because now they will play on the pitch, and we will have a scoreline, we'll have a result. But in terms of preparation, do you think India are well prepared going into this fixture? And we can wrap it up with that. Hiren? I think so, because player are coming up with the, you can say कि handy couple of matches under their belt. अगर आप बात करें आईएसएल के कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस उन्होंने खेले, कुछ मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर फ्रॉम द मुंबई सिटी एंड क्या बोलते कि मोहन बगान, जिन्होंने एएफसी कप एंड एएफसी चैंपियंस लीग के भी मैचेस खेले। तो कॉम्पिटिटिवनेस वाइज भी अगर आप देखें तो उन्होंने काफी कॉम्पिटिटिव मैच खेले, पर्टिकुलरली मुंबई सिटी के जो प्लेयरों ने जो खेले। आई डोंट थिंक सो कि वो कुवैत के प्लेयर के पास क्वालिटी है जो जिस तरह के ओपोनेंट उन्होंने खेले हैं। सो इन दैट सेंस आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे प्लेयरों को उतना अच्छा क्या बोलते कि रिदम में नहीं। आई थिंक फिटनेस वाइज दे आर ऑन टॉप लेवल। गेम टाइम आपको सबको मिला है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर इन फॉर्म, बेयरिंग 1 और 2 प्लेयर्स की जिनके बारे में थोड़ा सा कंसर्न है कि उतने ज्यादा फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग 11 की वाइज बात करें तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स आर इन गुड टच। सो आई थिंक प्रिपरेशन तो अच्छी हुई, जैसे सुनील सर ने भी बोला कि वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। कैंप भी आपने दुबई में जाके आपने अकोमोडेट भी कर लिया था कि भाई वहाँ की जो गल्फ की जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग, टीम भी आप एक दिन पहले पहुंच चुके। तो सारी चीजें आई थिंक अभी तक तो एज पर प्लान लगी है। मेरे को उतना ज्यादा मतलब आप नहीं बोल सकते कि आपको क्या बोलते कि दिक्कतें आई है।
टू बी ऑनेस्ट. सो आई एम सीइंग कि अभी जितना हमने देखा है रिपोर्ट्स और सारी चीजों से, उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड. Again, fair enough. Arnava, Lord Baker is pointing out that you didn't give us a scoreline. Before you answer the same question I asked Hiren, could you give us a scoreline and then move on to that? मेरा स्कोर लाइन तो 3-2 है टू इंडिया. Yeah, Hiren, Arnava, I think he did give us one. So, yeah, Hiren's was 3-2. Mitchell, 3-1 sorry, Kuwait. sorry to interrupt, sir. Mitchell is out, so I think most probably India will win now. Who? Darren Mitchell, New Zealand's Alan Mitchell. batsman. Again, you're talking about some weird sport nobody cares about. Anyway. Yeah, Yeah, no. it's a fact, right? I mean, again, I said that this whole Adidas thing with Thomas Miller was a good example to me, right? India's gone gaga about it. David Beckham is there. You've gone gaga about it. Yeah. The rest of the world is not bothered about it, right? So anyway, Yeah. that's some small bat ball game, right? Yeah. The world cares more about baseball than cricket, but anyway, that's a different discussion. I would think, yeah, I feel 3-1, 3-2 for Kuwait most probably is what I think is likely to happen. It's gonna be a scoring game, I feel, and as Hiren has also said, I think we are well prepared. But yeah, are we really? The defense is my concern, and that's the real thing. You know. So therefore, that's the point. Yeah, एक चीज मैं Arnava, आप दोनों से well, जानना नहीं नहीं yeah, yeah. राहुल, एक चीज मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, व्हाट विल बी द इंडियाज अप्रोच. मतलब आप किस तरह से देख लो कि अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएंगे या फिर मिड ब्लॉक या फिर थोड़ा सा डिफेंसिवली जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा डिफेंस भी उस तरह से डगमगाया हुआ है. सो क्या लगता है कि कौन सी अप्रोच के साथ इंडिया इस मैच में उतर सकती है? और अगर आप चाहे तो I फर्स्ट एंड सेकंड हाफ का I भी डिफरेंस बता सकते हैं. No, I would look at the game in quarters. I think Kuwait will come at India in the first 15 minutes. I think Kuwait will try and score an early goal. I think we need to be tight at the back. India will play like they did against Malaysia, trying to hit the opponent on the counter. You know, that was where, that opportunity from Sahal, the goal from Mahesh came from. I think that's going to be the approach. And you need to be tighter. You need to avoid, that Mahesh pass backwards towards Mehtab, which then, is intercepted by the Malaysians and they scored. So we have to be very, very alert in our defensive unit. Yeah, that's very, very much needed. And if we are alert, if we are ready, that will be good. But I think we will have to fall back onto the basics. If we can hit them on the counter, great. I think again we have the players for the counters, and we saw that in the second half against Malaysia as well. Is that we can put pressure on the opponent even in the second 45. So those are positive signs. But again, I think our defensive midfield is the concern, is the worry. That is what we need to sort out. If we can sort that out, then we have an opportunity. Otherwise, any chance for back three? I don't know because again, I have not seen any of the trainings. Again, we are speculating to some extent because I've not seen any of the training. If Igor has tried to do that in the last 2-3 days, maybe that's an option. But again, if you're playing a back three, who would be your back three? And who would be the attacking player you put on the bench? That's your next question. Right? So that's your difficulty in that. Or again, if you play a back three, do you then switch formations and become more like a Mohun Bagan? And for example, but again, it does make sense to put Changte out and then say, listen, I'm going to play Manveer Singh in that position. And so that's the point. And even to try a back three, it's too soon. I mean, we haven't done it for us to go into such a big game and suddenly try a new system. Sort of, we need to work with, I think, what we've done so far, and that would be the more reasonable approach, I think. In terms of approach, like what Hiren just asked, I completely agree with the comment that Anurag has sort of given. I think
we can hit them on the counter in the first half. I wouldn't mind giving them the ball and letting them have more of the ball at home. No problem. I think if we sort of see out a nil-all sort of scoreline at halftime, we will get more of the ball in the second half. And I think And that's yeah, and Rahul, the point is also that we saw against Malaysia, right? We conceded the equalizer, and we became nervous. Malaysia put a lot yeah, of pressure on us. We had these situations where Suresh and all were trying to sort of waltz in front of the box and then find options. What's the yeah, case? Just whack the ball out. Again, exactly, nobody cares about beautiful football tomorrow. Tomorrow is about the result. And if you exactly. can get the ball wide in a position where Tante or Mahesh or even Sunil or even Sahal can get it, that is what we need to do. That is, Yeah, we need to, um, it makes sense. And the lesson is of the last few years is whenever we've tried to play a back three or a back five, our players were not comfortable with it. Because the guy who normally calls the shots when you're playing a back three or a back five in ISL or in the I League is a foreigner and a quality foreigner. You know, yeah, Royston Griffiths was calling the shots at Mumbai. Mumbai City plays a 4-2-3-1. They played a 5-man backline against Al Hilal. Royston Griffiths was calling the shots. But you have a Tiri next to a Mehtab, and you saw Tiri was important, but Mehtab was the one who was at the end of the week link. So therefore, sorry, stay to a 4-man backline, have two players try and block, and then let's see. completely agree with you guys. Excited for the game. We're gonna have a cracker of a game. We're gonna have a discussion after the game as well. Can't wait for that as well. I really hope India pull off a result tomorrow, because then it sort of starts us really well going into this qualification campaign. Puts us in a good position to sort of go with a lot of confidence into that game against Qatar at home and potentially get a result. And 2 to 4 points. If it's either 2 or 4 points from these first two games, I will be over the moon. And yeah, 2 points also would be, I think, amazing for India to start off this campaign. Again, yeah, thanks Arnava, thanks Hiren for joining in, guys. Please do like and share this stream whenever you can. Like our videos, share our videos, and subscribe to all the channels: Sports Kabri, Curious Harry, Arun Foot, and Indian Food and Football. Tomorrow's the game. We do not know for sure where it's going to be streamed, but please do catch the game wherever it is being streamed, and join us for our chat, post match chat tomorrow. And yeah, enjoy the game. Thanks, Hiren. Thanks, Arnava. Good Thank you. night. Good night.